we move on to part C, right? One second. So if you have any doubts, I would like you to mention it in comments. Or right. One more thing that I forgot is you can always follow my Telegram channel, IAS @IAS Adi IAS ADIVIKRAM. So here I have mentioned the strategies related to GS. GS के I have 1, 2, 3, 4 prelims के I have shared the strategy for CSET. I have shared the basically Anthro का strategy also I have shared. So basically I have done everything, every strategy I have shared there. What I have followed, I have uploaded my answer copies. तो देख लेना एक बार. Just a friendly advice. कुछ ज़्यादा मैंने mention नहीं किया. I have tried to keep it minimal, right? So we move on to question number 5, part C, heritability and estimation, right? So again इस question में if there is someone who is not of biology background, for example I was also from engineering background, so you will think कि heritability पूछी and estimation पूछा है, so they must be asking some sort of numerical formulas या फिर कुछ biology होगी इसमें. But not to be fearful, this is an exam of anthropology and not an example of biology or mathematics, and anthro means human, and wherever this comes we have to answer it in a way that's showing human aspect. Heritability among human में heritability क्या होती है, कैसे होती है, क्या उससे फ़र्क पड़ता है, what's its relevance, how it helps, so these kind of things you have to mention, right? So what is heritability? First thing, definition. Always start with a definition. So definition by Francis Galton is one of the person who was related to heritability. He said that proportion of phenotypic variation in a population that is attributable to genetic differences among individual, right? So what is the phenotypic variation? For example, I am a person, there is some other person, how I have different skin color, different height from that person, and what is the percentage of genetic difference that is contributing to these differences. These differences could be environmental and these differences could be genetic. So genetically क्या differences हैं, that is giving me a different phenotype, different looks than the person that is other person, right? So that is basically heritability. So he was one of the pioneers of behavioral genetics. He initiated the study of heritability through his observation on twins, although he did not distinguish between monozygotic and ठीक है. So what is heritability? It's a statistical estimate that helps us explain how much of the variation in a trait is due to genetic factors or due to environment. For example, there are two people, ठीक है, there is one person, there is another person, right? So he is like, let's say 180 centimeter, another person is 1 centimeter. So what's the percentage of changes of differences in these two that could be attributed to genetic and that could be attributed to environment, ठीक है? So environment में, let's say for example the person is getting good nutrition, ठीक है, and avenues of good environment, तो obviously उसकी height ज़्यादा होगी, but there is some genetic factor also associated with it. अगर parents tall है तो हो सकता है उससे भी इंसान tall होगा. So height as a factor would depend on environmental as well as genetic, right? अब कितना percentage environmental है, कितना percentage genetic है, that is what heritability helps us understand. अब मेथड क्या होंगे इसमें? ट्विन स्टडीज़ होंगी. ट्विन स्टडीज़ में क्या होता है कि हम एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस लेंगे. मोनोजाइगोटिक मतलब एक ही जाइगोट से बने हुए दो ट्विंस, ठीक है, एंड वी विल टेक डाइजाइगोटिक जिसमें दो जाइगोट से बने हुए दो ट्विंस होंगे. अब दो डाइजाइगोटिक ट्विंस, आप बेसिकली उनमें वैसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है. आई मीन उनमें कुछ ऐसी सिमिलैरिटी नहीं होती. दे आर बेसिकली जस्ट लाइक टू चाइल्ड बोर्न टू अ वुमन. दे शेयर 100% ऑफ देयर जीन्स. उनका जेनेटिक DNA, उनका DNA वुड बी सेम. तो अब हम क्या करते हैं ट्विन स्टडीज़ में, लेट्स से देयर आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, ठीक है. अब हम उनको अलग अलग रख देते हैं एट डिफरेंट हाउस होल्ड्स, ठीक है. ये हाउस नंबर 1 में रहेगा, लेट मी मेक अ हाउस. ये हाउस नंबर 1 में रहेगा, हाउस नंबर 2 में रहेगा. इफ़ दे आर शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़, लेट्स से उनका IQ लेवल सेम है, सो वी कुड से कि जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है 100%. फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से उनकी हाइट सेम है, सो वी कुड से कि 100% डिपेंड करता है। बट लेट्स से कि दोनों बहुत ही अलग वे में हैं, उनकी हाइट अलग अलग हुई है। लेट्स से एक ट्विन हुआ है 170 सेंटीमीटर्स का, एक ट्विन हुआ है 175 सेंटीमीटर्स का। सो वी कैन से कि एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेड अ रोल। 175 सेंटीमीटर वाले के घर में देयर कुड हैव बीन अ बेटर एनवायरनमेंट, जिससे उसकी हाइट बढ़ गई, न्यूट्रिशन शायद अच्छा मिला हो, स्पोर्ट्स में शायद ही कुड हैव बीन बेटर, सो दैट वी कैन से। So basic principle in twin studies is greater similarity among monozygotic twins raised apart suggest genetic influence, or greater similarity among dizygotic twins raised together suggest environmental influence. Example दे देंगे मिनेसोटा ट्विन स्टडी स्टडीड बाय बुचर्ड, ये याद कर लेना हमेशा, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। देन देयर इज फोस्टर चाइल्ड, कोई हमने अडॉप्ट किया, लेट्स से वी आर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, सो द रिजेम्बलेंस ऑफ दैट अडॉप्टेड चाइल्ड टू द अडॉप्टेड पेरेंट्स, the parents who have adopted, if they are similar, traits are similar, then we can say environmental factor was the major reason for it. If the adopted child shows similarities in traits with the biological parents, then we can say the factor is genetic, right? So that is adoption method. Alcoholism study, for example, if the son is alcoholic, son of alcoholic biological fathers were 4 times more likely to develop alcoholism. So this shows there was a genetic factor, right? क्योंकि बायोलॉजिकल फादर था और बेटा सन वॉज इन एडॉप्टेड होम, सो कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर वुड हैव इन्फ्लुएंस्ड हिज दिस थिंग alcoholism, right? Then one more method that you can write is family and pedigree studies. So it uses correlations among relatives. For example, heritability of blood pressure अगर किसी में है, skin color है, तो फैमिली और पेडिग्री स्टडी से वी कैन सी कि कैसे इट हैज़ इन्फ्लुएंस, राइट? तो जेनेटिक कॉम्पोनेंट, टू फाइंड आउट अ जेनेटिक कॉम्पोनेंट. Then we can write a conclusion, simple conclusion, that it offers insights on how genes contribute to human diversity, right? So there are different genes, there are different genetic factors, so this has led to a diversity, and what it helps is it helps in adaptation to the environment as well, right? It helps us understand the influence of genes versus the influence of environment, nature versus nurture debate, nature versus nurture debate. It helps us understand human biological variation, ह्यूमन में बायोलॉजिकल वेरिएशन कैसे हैं, जिसकी हाइट है, स्किन कलर है, इंटेलिजेंस है, डिजीज ससेप्टिबिलिटी है, सम पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीज, अदर्स आर नॉट, राइट? सो दिस इज वन थिंग. ओके, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेपर 1. The question is authority and forms of political organization. So this is, if I am not wrong, पेपर 1 का 4th है, जिसमें वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, राइट? सो अथॉरिटी क्या है इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ या इन ट्राइबल सोसाइटीज़, एंड हाउ देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी एग्जिस्ट. ये हमें क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट. ओके, सो एलमन सर्विस, he classified, ye always an important name in the political anthropology. He based political integration and authority. He divided the societies into 4 types: bands, tribes, chiefdoms, and states. And you can also see these are how the tribes are progressing ultimately towards. Initial, the most primitive tribes would be having bands as a political form of organization. थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप होगी, इट वुड बी अ ट्राइब्स फॉर्म. थोड़ी ज़्यादा होगी, इट विल हैव अ चीफ एंड चीफडम वुड एग्जिस्ट. थोड़ी ज़्यादा होगी तो स्टेट्स वुड एग्जिस्ट. नाउ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन. अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ लेजिटिमेट पावर दैट इज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री. सो प्राइम मिनिस्टर हैज़ लेजिटिमेट पावर बिकॉज वी हैव इलेक्टेड हिम थ्रू इलेक्शंस. इलेक्शंस हुए थे, सो वी हैव गिवन हिम पावर थ्रू इलेक्शंस सो दैट ही कैन डू गुड थिंग्स फॉर द सोसाइटी. सो लेजिटिमेट पावर का यूज़ कर रहा है वो, लेजिटिमेट है वो, बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड हिम थ्रू इलेक्शंस. देयर कुड बी इलेजिटिमेट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेररिस्ट, राइट? सो दैट इज illegitimate use of power, right? So there we do not say they have the authority to rule over people. So Miller defines it as socially sanctioned right to make decisions, resolve conflicts, and enforce rules. Socially sanctioned right to make decisions, resolve conflicts, and enforce rules.
Authority in different forms of political organization. Now we are going back to the question कि there are different forms of political organization और उसमें different forms of authority है. First thing is bands. So bands are more or less egalitarian types of societies. These are small, these are kin based, foraging groups होते हैं, they go to the forest, they forage things, they pick up fruits, they pick up berries, right? They are on the move constantly. So there is no formal leadership, but there is first among equals, right? So for example, Bushmen of Kalahari Desert, studied by Richard Lee. So this is one of the scholar. Then there are Chola Naikans in Kerala, Indian example. So Indian examples, giving Indian examples in questions of paper 1 also gives a good advantage. Then the second form of political organization would be tribes. So these are larger than bands. Often these are horticultural or pastoral. इसमें अथॉरिटी क्या होगी ट्राइब्स में? देयर वुड बी अ विलेज हेडमैन या फिर, और ये परसुएशन एंड जेनरोसिटी पे काम करते हैं, ठीक है. सो विलेज हेडमैन वुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड वट एवर ही सेज, सो द पर्सन हैज़ टू डू, वो परसुएशन होता है, ठीक है. सो लेपर्ड स्किन चीफ अमंग न्यूअर्स ऑफ साउथ सुडान, ठीक है, स्टडीड बाय एवंस प्रिचर्ड. Whenever the example of Newers of South Sudan comes, you have to mention the scholar as Evans Pritchard, right? Then there are chiefdoms. Chiefdoms में क्या होता है? There is a chief who is more or less hereditary, ठीक है, वो centralized होते हैं. There are many tribes और उसमें they have a chief, right? For example, Polynesian chiefdoms होंगे in Hawaii, Tonga, ठीक है, और ये ascribed status पे होता है और एक kinship seniority होती है. These are more or less हायरार्की, जो एक के बाद दूसरा चीफ बनता है. सो इट्स मोर और लेस बेस्ड ऑन किनशिप. देन वी हैव द फोर्थ टाइप, स्टेट. इसमें ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी होती है, कोडिफाइड लॉज होते हैं, टैक्सेशन होती है, सिमिलर टू व्हाट मॉडर्न डे स्टेट होती है. सिमिलर वैसे ही कुछ कि कोडिफाइड लॉज होंगे ऑन हाउ वी आर पनिशिंग अ पर्सन, सो देयर आर सम लॉज रिलेटेड टू इट. टैक्सेशन होगा सो दैट देयर everyone is contributed to a pool and then it is redistributed, है ना. Redistribution का concept था ना, we had studied redistribution in economic anthropology. Marshall Salins और Service ने gave this concept. Institutionalized in offices, for example, अशांति स्टेट है, उसमें मिलिट्री टाइटल्स, एक्सप्रेसिंग रैंक्स, अथॉरिटी, किंग होता है, जुडिशियल हेड होता है, रिलीजियस हेड होता है, ठीक है. सो रेलिवेंस क्या हुआ इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का? It helps in maintaining social order, conflict resolution. For example, leopard skin chief is a symbol of is a person who resolves conflicts. Whatever the he gives a command कि this is the right thing, ये मैं दे रहा हूँ, judgment, final judgment what he gives is the person has to accept it, right? So every society, stateless or state, have certain mechanism to ensure social order through some form of authority that is given by another scholar, Radcliffe Brown. So whenever you are writing an answer for anthropology, try including a scholar in conclusion, try including a scholar in introduction, try including a few scholars between the body part, right? So we move on to the last question of question number 5, that is E part. 2024 का पेपर भी कर रहे हैं हम, single gene mutation in man, ठीक है. So these are also called monogenic disorders. अगर कोई एक single gene में we have some sort of disorder, it would lead to some sort of mutation and there would be some sort of disease that would occur in a person. So mutation, Hugo de Veris, wherever we are writing about mutation, write this scholar Hugo de Veris. He talked about heritable change in a DNA sequence, ठीक है. तो सिंगल चेंज म्यूटेशन की डेफिनेशन हमने लिख लिया यहाँ पे कि these involve changes in the DNA sequence of a single gene affecting the function of the corresponding protein, ठीक है. जीन में चेंजेस होंगे, ठीक है, डीएनए में चेंजेस होंगे, इट विल लीड टू प्रोटीन में चेंजेस होंगे तो फाइनल फंक्शन ऑफ अ पर्सन में चेंजेस होंगे, ठीक है. सो दीज म्यूटेशन में इंक्लूड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इंसर्शन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, क्रोमोसोमल एबरेशंस. इफ़ यू हैव रेड क्रोमोसोमल एबरेशंस, ठीक है, कैसे होते हैं वो पढ़ लेना. तो फर्स्ट वी वुड गो सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? HBB जीन जो होती है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वी हैव वेलिन. सो इट प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल शेप्ड हीमोग्लोबिन. सिकल सेल शेप्ड RBCs हो जाते हैं, है ना. सो इट लीड्स टू सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया के बारे में इफ़ यू डोंट नो व्हाट हैपेंस इज, इसमें सिंस द RBCs are sickle cell shaped, the quantity of oxygen they can carry is reduced and this leads to
conditions where a person has low oxygen levels, उसमें lethargy होगी, energy levels will drop, है ना, hemoglobin levels will drop. So JBS Haldane, one advantage of this is अगर heterozygous condition में है sickle cell anemia तो malaria endemic region में it helps because malaria होने के chances it reduces a lot. Second we can write is disorder due to single gene mutation is cystic fibrosis where deletion of 3 nucleotides in CFTR genes. So इसमें क्या होता है, cystic fibrosis में cysts बन जाते हैं in the lungs. So it leads to a reduced lung capacity, उसमें issues आते हैं. ठीक है. Third is lactose intolerance. तो LCT जीन्स में अगर चेंजेस होंगे तो लैक्टोस इंटॉलरेंस हो जाएगी. ठीक है, विच लीड्स टू इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोस. लैक्टोस क्या होता है, मिल्क वगैरह के प्रोडक्ट्स में होता है ना जो प्रोटीन, उसको डाइजेशन करने में इट वुड गिव अ इशू. अदर ऑल्सो यू कुड राइट इफ यू नो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया. ठीक है, ये ऑल्सो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं. यू कैन रीड मोर अबाउट दैम. अब सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग दीज, व्हाट इज़ द रेलिवेंस इन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रीडिंग दीज सिंगल जीन म्यूटेशन. ठीक है, म्यूटेशंस लीड्स टू वेरिएशंस, और वेरिएशंस क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है, सो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इट हेल्प्स अस इन अडेप्टेशन टू दी चेंजिंग एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कुछ म्यूटेशन हुआ और इट समटाइम्स कुड गिव अ एवोल्यूशनरी एडवांटेज वेयर द पर्सन to whom it is passed in the future generations, उसको एक advantage आता है to live. So that's how we have evolved over the years from Australopithecus to Erectus to Sapiens now. Single gene mutation HBB gene, that malaria वाला, sickle cell anemia वाला HBB gene में जाता है. So it give HBS, HBA, HBS जो ये होता है, ये वाला heterozygous condition होता है. ठीक है, it helps us in protection against malaria in the tropical environments, in the equatorial environments जहाँ पे malaria is a problem. Third, it helps us insights into evolutionary pressures and natural selections, right? ये मैंने अभी बता दिया है. So conclusion we will write, it offers a window into genetic diversity, adaptation, evolutionary mechanism in humans. It also helps us understand population genetics, disease के patterns क्या है, gene environment interaction क्या है. और with the coming of techniques such as CRISPR-Cas9, so what it helps is it can edit default, it can helps us in finding the faulty genes and more or less improve करने में to rectify the problem. So you have a few techniques that are being going on based on this CRISPR-Cas9 sickle cell anemia की we have a upcoming latest technology, है ना. I'm unable to recall the name, but there is a technology which is helping in editing the gene so that sickle cell anemia patients could be treated. Right, so these were the question number 5 that I have done. Always remember anthropology का पेपर है, you have to write anthropological way में. Try including a few diagrams. इसमें I am not included, but try included. For example यहाँ पे जैसे I have written about RBC का डायग्राम बना दिया, या फिर there was one more diagram, जैसे ये वाला एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना दिया. ठीक है, so this gives ये कुला का बना दिया. So this helps us in giving a bit more space to write less and also show our things in a better way. Alright, so we'll meet again for another question for PYQ 2024. Till then, bye bye. All the best for your exam. Good luck.